Across Indian cities, food vendors are the heartbeat of our streets, serving warmth, flavor, and comfort to more than 1 million Indians daily. But behind every plate served, there are long hours, unpredictable conditions, and limitations in infrastructure and visibility. Despite being essential to urban life, these nano entrepreneurs often struggle to scale and sustain their businesses. The Udyam Vyapar Food Project is transforming this story, empowering food street vendors to build more resilient businesses. Through a solution model which works across front-end service improvement, cart and asset upgrades, optimization of cooking operations and culinary training, and digital discoverability. At the heart of this all is always one-on-one mentoring. ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇದೆ, ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬನ್ನಿ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಐಡಿಯಾಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. Every intervention is designed to boost customer experience, speed, hygiene and sales. नहीं मालूम था, उनकी तरफ से हमको उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिला है. उसके बाद हम लोग को एक चूल्हा मिला है. फर्स्ट हमारे पास था चूल्हा, वो डबल बर्नर का था, बट उसमें उतना हम लोग को कस्टमर्स मतलब हमारे पास आइटम्स बहुत है, वेराइटीज, तो एक बार में कस्टमर ज्यादा आते थे तो हम लोग को कंट्रोल करने नहीं होता था. तो ये अभी 3 बर्नर का है, इससे हम लोग का काम भी फास्ट होता है, कस्टमर को ज्यादा वेट भी करना नहीं पड़ता है. इस चूल्हे की वजह से हम लोगों ने कुछ आइटम्स को और बढ़ाया भी है. और सेकेंडली हमको उद्यम के तरफ से रिसेंटली एक ट्रेनिंग मिला था फॉर फूड, मतलब हम लोग को हाइजीन सभी कैसे मतलब कैसे रखना है, देन क्या क्या हम लोग अपने खाने में इम्प्रूव कर सकते हैं. लाइक अभी कलर्स बैन हुआ है, तो वो कलर को नेचुरली कलर हम कैसे ला सकते हैं अपने फूड में, और विदाउट अजीनोमोटो सभी यूज किए बगैर हम लोग कैसे खाना बना सकते हैं. देन 2 टाइप्स का हम लोग को उन्होंने सॉसेस बनाने का सिखाया. उसकी वजह से हम लोग का बिजनेस में भी एक्सपैंड हुआ है. हम वो सॉसेस बनाते हैं और हम बेचते भी है, और कस्टमर की तरफ से भी हमारा रिव्यू भी अच्छा है. And the impact is real. Among our pilot vendors, footfall grew by 30%. Revenues rose by 26%. Today, the project is scaling to support 400 food street vendors in Bengaluru, helping them bet on themselves, their craft and their futures. ನಮಗೆ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬೆಳಕು ಏನೋ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಕಮ್ಮು ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ಈಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ಕಮ್ಮು ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಡ್ರು ಅದೇ ಥರ ಬಂತು. ಈ ರೀಲ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೈಸ್ ಆಯಿತು.